Good evening, everyone. Warm welcome to Testbook YouTube channel for regulatory bodies. If you are preparing for RBI Grade B examination, or for that matter IFSCA Grade A examination, or maybe for PFRDA examination, this session is a must-watch session where we discuss the finance current affairs. So today we will be discussing the finance current affairs for 30th to 31st of August. I was not able to conduct a session on Tuesday, but don't worry, I will be covering the backlogs in this particular week itself. Maybe if required, I will be taking one extra session in order to get up to date. So I hope we are good to go. This session has been delayed. Its actual time is 5 p.m. but it has been delayed due to the quite obvious reason, because you have got another good news, that is IFSCA Grade A notification is out. I would say the short notice is out, and Manish Sir has already conducted the session on it, and he will be coming up with a detailed notification discussion as well. So guys, agar ab nahi to kab, this is the right time to give your 100% for regulatory bodies, because RBI Grade B notification ऑलमोस्ट आउट ही है. अगर हम बात करें IFSCA आज आउट हो गई है, PFRD एग्जामिनेशन इस वीक है, SEBI एग्जामिनेशन इस वीक है. सो दिस is the right time for regulatory bodies, and this is the right time to utilize your learnings, your skills which you have gained in last 1 year for this particular category. So let's get started guys without any further delay. And for you all guys, as I have already promised you, कि अब RBI Grade B का जब एग्जामिनेशन अनाउंस हो चुका है, IFSCA का एग्जामिनेशन अनाउंस हो चुका है, then I will try my level best to include as many descriptive questions I can add from the current affairs itself. So today also I have a descriptive question for you all guys from the news which I'm going to cover today, and today's descriptive question has a high probability that it can be asked in the upcoming examination. So please share the link of this session with your friends so that everyone should know the session is live. Many of the candidates must have come up to the platform and they might be waiting कि session आज होगा भी या नहीं. तो yes, the session is live. और दूसरा पॉइंट है कि जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था RBI सर्कुलर्स के हैंड रिटन नोट्स का. So as you know, Manish Sir has already taken a video where he has discussed the sessions which we are going to conduct on YouTube. तो YouTube पे I will be conducting around 3 sessions for RBI circulars, और in RBI circular sessions में I will be discussing the MCQs, और हर MCQ discussion session के बाद I will be giving you the handwritten notes of all those circulars which I will be discussing in this MCQ session. तो this is going to be really very important, क्योंकि आपके पास MCQ practice भी हो जाएगी उस particular circular से, और उसके handwritten notes भी उसी session में आपको मिल जाएंगे. ठीक है जी. If you want to share your descriptive answers with me, you can do it. एक तरीका तो यही है, you can share your descriptive answer on the YouTube platform itself. आप comments में जाकर अपने descriptive answer को paste कर सकते हैं. अगर आप वहाँ नहीं करना चाहते, then you can share these answers with me on my Telegram channel. अगर आप channel में भी openly share नहीं करना चाहते, then you can give me a direct message, और उस डायरेक्ट मैसेज की फॉर्मेट पे DM कीजिए, और DM करके आप अपने आंसर्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. आई विल बी शेयरिंग द PDF फॉर द सेम. आई होप युक्ता योर डाउट इज क्लियर. So guys, if we are good to go and you all want me to start with the discussion, can I have a thumbs up in the comment section? Can I have yes sir? Guys, how's the जोश? बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कब कोई नोटिफिकेशन आएगा. PFRD आया, ठीक है, लेकिन उसमें वैकेंसीज कम थी. SEBI आया, उसने कहीं ना कहीं हमसे इंपॉर्टेंस दिखा दी रिगार्डिंग दी एक्सपीरियंस. लेकिन अब RBI Grade B, IFSCA एंड बहुत जल्द NABARD, these 3 exams are going to be lined up for you. I hope your जोश is high. अब आपको लग रहा होगा कि yes, you should give your 100%, or I would say more than 100% in order to prepare for this particular examination. Here we go with the first news. देखने अगर आप एक नज़र से देखोगे, this news is very easy. इसमें कुछ नहीं है. इस न्यूज़ में कुछ 3-4 नंबर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, लेकिन इसी न्यूज़ से आई हैव फ्रेम्ड अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फॉर यू. आई विल बी डिस्कसिंग द इंटेंसिटी ऑफ दैट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कि कैसे और क्यों मैं कह रहा हूँ कि दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. सेकेंडली, आई विल बी गिविंग यू द पॉइंट्स विच यू नीड टू मेंशन while answering that particular question, and lastly I will give you the sample answer as well
but only if you will be sharing your answers with me. Then after receiving your responses, I will be sharing my sample answer also with you. ठीक है जी? So let's get started. Here we go. So first of all, न्यूज़ क्या है? सर न्यूज़ बड़ी सिंपल है कि अगर हम अगस्त 2025 की बात करें तो in August 2025 the number of UPI transactions has crossed a count of 20 billion transactions. 20 billion transactions means 20 into 10 to the power 9. 10 to the power 9 means 2000 crore transactions. Yes, you heard it correct. Around 2000 crore transactions have been done in the month of August 2025, which is a good number, but still आपकी जो government है, it is looking forward to achieve a target of around 1 crore transactions. Or if I talk about 100 crore transactions on regular basis. So अगर हम government के हिसाब से चले तो government का जो target है, that is around 3000 crore transactions or 30 billion transactions in a month. This is the target which government is taking up. लेकिन हाँ 20 बिलियन का भी पहली बार ये पॉइंट यूपीआई के प्लेटफॉर्म पे अचीव हुआ है. दैट इज इन अगस्त 2025. टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वर $20.1 बिलियन. अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. सबसे पहला वॉल्यूम. सर वॉल्यूम इज 20.1 और 20.01 बिलियन ट्रांजैक्शंस. व्हाट वाज द वैल्यू? सर वैल्यू भी अच्छी खासी है. दैट इज 24.85 lakh crore rupees. If you talk about the year-on-year growth, sir, year-on-year growth in terms of value is 21%. In terms of volume is 34%. ये ट्रेंड है गाइस. अगर आप अगली बार कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाए तो 99.9% वॉल्यूम में जो ईयर ऑन ईयर बेस्ड ग्रोथ होगा दैट विल बी ग्रेटर देन वैल्यू का ईयर ऑन ईयर बेस्ड ग्रोथ. तो ये आई एम नॉट सेइंग दैट it's going to be 100% true, but majority cases में this happens because volume is increasing at a much higher rate in comparison to the value, which shows that we are still not using UPI for our bulk transactions, but हाँ retail transactions के लिए we are readily using UPI transactions or UPI platform. If I talk about the average daily transactions, it is around 6.45. It is around 645 million transactions, which is around 64.5 crores. Average daily value is around 80,161 crore and average value transaction is around 1241. So if you ask me, क्या ये datas मेरे लिए important है? नहीं guys, these datas are not important for you. But yes, this average value per transaction is important. Exactly भी ना याद रहे. So you must have an idea कि इंडिया में जो on an average UPI transaction है, it is not 200, it is not 250, it is not 100, it is 1200 rupees, which is correctly a very good value. So note that RBI NPCI announcement typically quote around numbers for year on year growth 34 and 21%. Precisely the calculation says 34.3% and 20.63%. तो कल को आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर आपने गलत डेटा दे दिया. आई हैव नॉट गिवन यू अ रॉन्ग डेटा, आई हैव जस्ट गिवन यू द डेटा विच यू कैन रिमेंबर. लेकिन मैंने आपके साथ एक्चुअल डेटाज भी शेयर कर दिए. सो यू कैन गो विद इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है जी, गॉट इट, क्लियर? चले आगे, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बट बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर यहां से एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाना, क्या आप यूपीआई पे क्वेश्चन बना दिया आपने? बिल्कुल, मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यूपीआई पे बना दिया. क्या सर यूपीआई पे आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा. कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं. एंड यू विल, द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन यू विल फील दैट एग्जामिनेशन फीवर कि हाँ यार एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So stay tuned. Moving on to the next slide. The next slide talks about the daily average volume. The next slide talks about the daily average value and average transaction value. ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? I have shared the calculation वाला पार्ट. ठीक है जी, I have shared the calculation वाला पार्ट, आप पढ़ लेना. That is it. Now, please check out the question, which is very important. ये क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िएगा. गो थ्रू विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस. सी दी
intensity, the way I have presented the question. So what does the question say? The question says UPI has crossed 20 billion monthly transactions in August 2025, making a historic scale in India's digital payment journey. Discuss its importance as well as key drivers behind this growth and its benefits and major risk and challenges associated. आपको नहीं लग रहा कि यूपीआई रिलेटेड अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट, बिकॉज यूपीआई का इन एंड आउट मैंने पूरा ही कवर कर लिया. मैंने क्या कहा, व्हाट आई सेड इन द क्वेश्चन, दैट यूपीआई ट्रांजैक्शन or volume number has increased to a value of 20 billion, and obviously this is giving a good push to the digital payment journey of India. Discuss the importance of UPI as well as discuss the key drivers behind this, its benefits and the major risk and challenges associated. अगर आपको लग रहा है that yes, this is a holistic question which can be asked in the examination, give me a thumbs up. Now the question is how you will be writing down the answer for this particular question. First of all, we all know that जब भी कभी हम descriptive की बात करते हैं, we divide our answer into 3 frames. अगर हम 3 frames की बात करें तो 3 frames में सबसे पहला point होगा क्या? सबसे पहला point will be your introduction. Introduction के बाद you will be going with the main body. After the main body you will be going with the conclusion. Guys, if you listen me, if you follow me, then my suggestion is जब भी कभी हम बात करते हैं ना एक descriptive question की, try to provide data, facts, figures in the introduction as well as in the conclusion, so that the examiner get a very good idea that you have good command on the numbers और आपको वो numbers वो references याद है. So keeping the same in mind, what I have done is I have written the introduction in a very simple format and I have taken the introduction from the question only. In August 2025, UPI operated by NPCI crossed 20.01 billion monthly transactions worth 24.85 lakh crores. This represents 34% year-on-year growth in volume, 21% year-on-year growth in value with daily averages of 645 million transactions. It highlights UPI's role as the backbone of India's digital payment ecosystem. तो मैंने क्या किया, जो इन्होंने ये पॉइंट थोड़ा सा दिया था क्वेश्चन में, I have raised the importance of this particular point in the introduction itself and I have given ample of data around it which you can easily provide. ठीक है जी. After giving this data, you will be moving on to the main body. The moment you will jump on to the main body, तो main body में आपको क्या क्या आंसर करना है? सबसे पहला, you have to answer why UPI is important. Please pay attention. You have to answer why UPI is important. This is the first point. Second point is, what are the key drivers behind the growth? Second. Third point is, what are the benefits of this huge number of UPI transactions? And fourth part which we have to discuss is the risk as well as the challenges. So I'll start my first with the term why this milestone is important, or what is the significance or implication of this particular milestone. So the first point I have is scale and adoption. If I talk about scale and adoption, what does it mean? It means that 20 billion transactions per month signals deep penetration of digital payment across the customers and businesses, and it is somehow mainstream. It is basically the mainstreaming of UPI as a primary payment channel. That is what I'm trying to refer over here. Second point in terms of importance is network effects. So more users, more merchants will accept UPI, more useful for user, it will be a positive feedback loop. High transaction volume increase the utility for fintechs as well as banks. So this is the network and its effect. Then we have the third point, financial inclusion. Large volume and expansion into the non-metro as well as low value payments imply more people using formal financial segments rather than using the cash in order to complete their transactions. The next point is, the next point in this particular discussion is digitalization of economy. So significant share of small or micro transactions, significant share of small or micro transactions, that is average around 1200
rupees transaction or 1200 rupees per transaction shows that UPI role beyond the big ticket transfers, for example, grocery, kirana purchase, utility bill, peer transfers. So this is again a very important aspect. The third point, sorry, the fourth one is digitalization of economy. Digitalization of economy का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि सर somehow सिर्फ और सिर्फ आप ग्रोसरी बिल्स के लिए या पीयर टू पीयर पेमेंट के लिए यूपीआई को यूज नहीं कर रहे. अगर यूपीआई की जो एवरेज ट्रांजेक्शन है दैट इज 1200 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, देन इट्स क्वाइट ऑब्वियस, UPI is being used beyond your regular, beyond your basic transactions. Moving on to the next point, why this milestone is important. So the next point is cost effective. So digital payments, lower transaction cost, improve transparency, as well as it speed up the settlement for merchants and banks. The next point is policy and macro. If I talk about policy and macro, then I would say high frequency, high flow of data will help the government as well as RBI to monitor the consumption trend in a more appropriate manner. It will push India towards cashless economy, and it will help in designing a better digital payment ecosystem for the country. These are the importances, or these are the, I would say, importance of this value which has been shared in the question itself. The second point is, sir, why? What is the reason behind this growth? What are the drivers behind this growth? So the drivers behind this growth is merchant acceptance growth. So merchant acceptance growth means more small merchants, Kirana stores, they are accepting QR, UPI, offline to online solution. So that is the reason. Second reason or second push for UPI transaction is multiple apps and interoperability. So UPI is available through many bank apps. And the best part is from phone pay, you can send the money to Paytm, and from Paytm you can receive the money on phone pay, which means कि ये जो UPI ecosystem है, it offers interoperability. It doesn't mean that you can transfer the funds from one app, or you can transfer the funds within one app. You can transfer the funds from one app to another app in the same UPI ecosystem. That is the main driver behind this particular growth. क्योंकि अगर आप देखो, पेटीएम ने वॉलेट लॉन्च किया था, फॉर दैट मैटर फोन पे भी अपना वॉलेट लॉन्च करके बैठा है, लेकिन वो वॉलेट्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला. अगर आप टेक्निकली सोचे, वॉलेट और यूपीआई ट्रांजैक्शंस में कोई ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना, फंड्स रियल टाइम में पे हो रहे हैं, बट इन केस ऑफ वॉलेट्स यू वर नॉट अलाउड टू मेक द पेमेंट्स, और दे वर नॉट इंटरऑपरेटेबल, जिसकी वजह से दे हैव नॉट आई वुड से फ्लरिश्ड इन एन एप्रोप्रिएट मैनर, अनलाइक यूपीआई. देन वी हैव रैकरिंग एंड बिल पेमेंट्स. So recurring payments, bill payments can be easily done through UPI, which has increased its importance. Then smartphones are used. Not only smartphones, now we have the offline initiatives like UPI 123 Pay, or we have low tech onboarding, which has widened the reach not only for the smartphone users, it has widened the reach of UPI to the non-smartphone users as well. Then promotion and ecosystem expansion. मर्चेंट्स को इंसेंटिव दिया, गवर्नमेंट आज भी सब्सिडी दे रही है ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लॉयल्टी स्कीम्स प्रोवाइड की जा रही है, इजियर मर्चेंट ऑनबोर्डिंग है. तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पुश कर रहा है यूपीआई को. देन ऑब्वियसली वी आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम कैश, and the last is high frequency small ticket payments. So P2P transfers, splitting bills and micro payments, they have somehow pushed the UPI to new heights. Now moving on to the third part. सर इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इफ आई टॉक अबाउट इट्स बेनिफिट्स, सो फॉर कंज्यूमर्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर्स? कंज्यूमर के लिए यूपीआई इज कन्वीनियंट, सेफ, क्विक रिफंड्स, क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नो ट्रांजैक्शन फीस और लो ट्रांजैक्शन फीस. दीज आर द बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर. व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर मर्चेंट? फॉर मर्चेंट्स, अ फास्टर सेटलमेंट, लोअर कैश हैंडलिंग कॉस्ट, डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ सेल्स which aid the formalization of the banking sector. Third point is benefits for the banks or fintechs. Sir, it provides deeper customer engagement, it provides cross-sell opportunities, as well as it provide data for credit scoring. So this is the benefit for banks and fintech. And lastly, for policymakers, sir,
For policymakers, it is a clear digital footprint of the economic activities, better tax compliance signals, and whatnot. Last and the most important aspect, that is risk and challenges. अब इसमें क्या क्या risk है, क्या क्या challenges है? So the first point is risk and challenges, fraud and social engineering. So high volume create targets for phishing or OTP frauds. Robust customer protection is very critical. So this is the first challenge. Second is operational resilience. Infrastructure must handle the traffic increase. That means infrastructure should be scalable. It should be capable of tolerating the faults. Then privacy and data governance. Sensitive payment metadata needs strong safeguard, which is again one of the important concern. Then concentration risk. So over dependency on one private bank or maybe supra banking switch like NPCI raises the systematic risk consideration. So mitigation is need to be done, regulation is need to be done, and monitoring is need to be done. That is again one of the important concern. Last concern, which I believe is profitability for ecosystem players. Low per transaction fees means sustainability, which depends on scale and ancillary services. तो अगर आप ट्रांजेक्शन सर्विसेज को बहुत लो रखना चाह रहे हैं फीस को, तो उस केस में यू शुड प्रोवाइड a number of other areas so that the service providers they can expand, they can make good chunk of profit out of it. Last is monetary policy implications. So extremely low cost and instant payments can affect the velocity of money and the demand patterns. So RBI need to watch this very carefully. Otherwise अगर RBI ने UPI के बेसिस पे कोई मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लिया, दैट इज रॉन्ग, और यूपीआई को इग्नोर करके मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लिया, वो भी गलत है. सो दैट इज नीड टू बी लुक्ड अपॉन. देन द लास्ट पार्ट ऑफ आवर question is basically the policy as well as the regulatory challenges. So if I talk about the policy and regulatory challenges, they are simple: security guidelines, merchant grievance redressal, interoperability, monitoring of anti-money laundering, and promoting competition. These are some of the areas which are need to be looked upon by the regulators. Last and the most important is the conclusion. तो conclusion फिर से मैंने उसी बड़े नंबर के साथ किया and I have concluded this entire statement. अब अगर UPI related कोई भी question आपके examination में आया, तो I believe इस aspect से बाहर नहीं आएगा, and you have ample of data. What is the why UPI expansion is important? You have answer to that. What are the key drivers behind UPI expansion? You have the pointers for that. The next point is what are the benefits of UPI expansion? You have the pointers for that. What are the risk, challenges or policy issues related to UPI expansion? You have the answers to that as well. तो अगर आपने इस PDF को एक बार डाउनलोड करके पढ़ लिया, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल है, I can assure you guys, if you read this PDF twice and you watch this segment and you watch the segment of this particular examination at least twice, you can answer all the relevant questions related to UPI. अब पॉइंट ये आता है कि सर UPI से क्वेश्चन आने के चांसेस है, पूरे चांसेस है, बिकॉज UPI is being in news from past so many months, और हर महीने UPI पे कोई ना कोई एक नई न्यूज देखने को मिलती है. तो लुकिंग आउट the importance of UPI, question will be asked, and I have given you the holistic answer for the UPI aspect. ठीक है जी, क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट तो पूछ लीजिए. नो यू हैव टू डिफाइन इट गौरव. ये तो मैंने आपके लिए लिखे थे ताकि मैं आपको समझा दूं, बोल के समझा दूं. आपको तो वहां पूरा लिखना होगा भाई. एग्जामिनर थोड़ा ना जानेगा कि आपके मन में क्या है. You have to explain each and every point. This is not a sample answer, guys. This is just a reference to write sample answer. This is just a reference to write sample answer. I will be sharing my sample answer if you will be sharing your answer with me. आप मेरे साथ अपना आंसर शेयर कीजिए. I will be sharing my answer with you. So it is 15 marker question, guys. Try to conclude it within 600 words. लेकिन क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को इंटेंशनली थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाया, so we'll ignore the point of word limit. So you try to write as much as you can related to UPI so that you have one structured UPI sample answer which you can revise again and again. If a question is asked, you can answer any type of question from UPI from one descriptive answer only. ये मेरा thought है. Is it clear?
युक्ता क्लियर हो गया? ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू आंसर अ multi choice question. UPI processed 20.01 billion transactions in August 2025, crossing the 20 billion monthly mark for the first time. That is true. Total transaction value was 24.85 lakh crores, up from 20.60 lakh crores. That is true. The year on year growth was 21% in volume, 34% in value. मैंने आपको पहले ही बताया था वॉल्यूम का ग्रोथ हमेशा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वैल्यू. तो अगर आपको नंबर्स नहीं भी याद, देन ऑल्सो यू कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. The next point says UPI handled around 645 million daily transactions in August 2025. That is true. The average transaction value is around 1200. That is also true. That is also true. तो technically अगर हम चले तो आंसर क्या होना चाहिए? So if we go technically, sir, answer is going to be what? Sir, answer is going to be 1, 2, 4 and 5. Only and only third statement is wrong. Only and only third statement is wrong. If you have any doubt, you may ask, please. Otherwise, I will be moving on to the next question. The next question talks about UPI is operated by NPCI. That is true. So NPCI is the authority responsible for UPI transactions. NPCI also operates other systems like IMPS, Aadhaar enabled payment system, RuPay. That is also correct. DFS under the Ministry of Finance coordinates announcement with UPI and RBI, with NPCI and RBI. Okay. Volume means the total rupee value. No. Value means total number of transactions. No, ये उल्टा है. UPI enables real-time P2P, P2M transfers using UPI ID, mobile number, QR code. That is true. So answer इसका भी क्या होगा? 1, 2, 3, 5 is the correct answer. Fourth option is going to be wrong for this given question. समझ आ गई बात? क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ो. Shall I move on to the next news? May I have an answer? ठीक है. The next news I have for you all is related to RBI RBI notification, and in the RBI notification or RBI press release, you can say RBI has released the data on balance of payment, as well as RBI has released the data for its Forex reserves. Now you must be wondering that sir, ये जो balance of payment का data है या फिर ये जो Forex reserves का data है, these datas they are very volatile in nature, and if these datas they are volatile in nature, will it be correct? Will it be right to memorize the data for them? My answer is big yes. Why big yes? क्योंकि जो डेटा मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, this is the quarterly data which RBI has released for April to June. अब अगला जो डेटा रिलीज करेगा RBI, that will be for July, August, September, and RBI will be releasing that data maybe in October last week or maybe in the November first week. Technically अगर इस बार सितंबर में आया तो आपका जो डेटा है वो भी अगली बार का डेटा नवंबर फर्स्ट वीक में आएगा, तो उससे पहले आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन हो जाएगा. अगर उससे पहले आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन हो जाएगा, देन इन दैट पर्टिकुलर केस फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन, इफ इट इज हैपनिंग बिफोर November, then for RBI Grade B phase 1 as well as for IFSCA Grade A phase 1, this data is really very important, जिसे आपको याद रखना है, जिसे आपको आने वाले दिनों में 3-4 बार रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है. सबसे पहला पॉइंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट? सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. Whenever, I'll just take 2 minutes of yours. Whenever we talk about balance of payment, basically balance of payment keep the record of all the incoming and outgoing transactions, or of all the transactions done by India with rest of the world. So all the transactions done by India or Indian residents with rest of the world is basically recorded under balance of payment. Now in this case, some of the transactions are recorded as capital account transactions, those transactions which result in impact on asset or liability. That means loan, investment, they all are the part of capital account transactions. And the other one, we have current account transactions which has no impact on asset liability, which are very regular transactions like export import, or we can have transactions of salary payments, profit flow, remittance, grant and aid. They all fall in the category of current account. अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में दोनों में ही
we have inflows as well as we have outflows, है ना. If inflow is greater than outflow, that means our balance of payment is surplus. That means our balance of payment is surplus. And if it is less, that means inflow is less than outflow, then we have a situation of deficit. और deficit की situation में क्या होगा सर? deficit की situation में what will be done? Sir, RBI will be using the nation's forex reserves, और जो RBI के पास forex reserves पड़े हैं, उन forex reserves में से RBI will try to overcome this deficit, क्योंकि deficit का मतलब है negative. अब negative mathematically तो ठीक है, आपने लिख दिया कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, नेगेटिव है, ये तो ठीक है, लिखने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है ना. प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे नहीं है? इसका मतलब ये हुआ यू आर स्पेंडिंग 100 रुपीज बट यू आर पेइंग 95 ओनली. इज दिस पॉसिबल? नो सर, जिससे सामान खरीदा वो हमारे रिश्तेदार तो है नहीं, उन्हें तो अगले 5 रुपए और चाहिए, और ये जो $5 आपके पास कम है, वो $5 आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से निकालेगा, जिससे फॉरेक्स रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? डिप्लीट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. सो कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड, I will be discussing the status of balance of payment of India. Even I will be discussing the status of forex reserves due to the current balance of payment scenarios. ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि आपका अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है, उस डेफिसिट को ओवरकम किया जाए विद द हेल्प ऑफ कैपिटल अकाउंट, जहां गवर्नमेंट जहां पे हम क्या करते हैं, वी बोरो द फंड्स फ्रॉम द अदर नेशंस, और रेजिडेंट्स दे बोरो द फंड्स इन ऑर्डर टू मैच this deficiency, but if it is not done, then it will result in the current scenario which is written. ठीक है जी, समझ आ गई मोटी मोटी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. जिसको क्लियर था उसके लिए रिवीजन हो गई, जिसको क्लियर नहीं था उसे समझ आ गया होगा. सो इट इज बेसिकली a systematic record of all the economic transactions between resident of India and rest of the world in a specific period. Current account, trade in goods and services, primary income as well as secondary income. Primary income means investment income, profit, salary. Secondary income like remittances, transfer of funds and whatnot. Capital and financial account talks about cross-border investments, borrowings, banking flows and deposits. Then we have change in reserves, as I already discussed कि अगर आपका balance of payment surplus होगा तो वो surplus funds will be added in the reserves, so your reserves will increase. If your balance of payment is deficit, in order to overcome that deficit, balance of payment will be I would say compensated, or the deficit will be compensated through the reserves itself, जिससे reserves क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. तो कुछ ऐसा structure बनेगा. This is your current account which include goods and services, यानी import export, which include primary income like income, salary, wages, pension, profit. Secondary income like remittances and other transfers. Capital में we have foreign investment for FDI, FPI, external commercial borrowings, NRI deposits. These all fall in the category of capital account. इन दोनों का collective balance gives us the balance of payment. Positive तो surplus, negative तो deficit. Surplus है तो reserves will increase, negative है तो reserves will decrease. ठीक है जी, clear हो गया? I hope the concept is clear. अगर concept समझ आया हो, give me a big thumbs up in the comment section. Now let's go and check the data relevant to the same. So in case of current account, very important, the current account deficit is around $2.4 billion, which is 0.2% of India's GDP for the quarter first of 2025-26. दूसरा point है 0.9% of GDP was the data in the last year same quarter 2024-25. तो ये दोनों डेटाज इंपॉर्टेंट है. इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेटा, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेटा, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, दैट इज 0.2% ऑफ जीडीपी. ठीक, इसका मतलब 0.9 से 0.2% हो गई जीडीपी, 0.2% ऑफ जीडीपी हो गया आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, विच इज लो, विच मीन्स सस्टेनेबल, नॉट अ रिस्क टू स्टेबिलिटी, दैट मीन्स वी आर स्टेबल. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट में कंट्रीब्यूशन किसका? कंट्रीब्यूशन होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का. इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी वी हैव मर्केंटाइज ट्रेड, वी हैव सर्विस ट्रेड. यू नो व्हाट, इंडिया का जो सर्विस ट्रेड है दैट इज सरप्लस, व्हिच मींस वी आर एक्सपोर्टिंग more value of services, way more value of services in comparison to our import of services. But on the other side, our merchandise imports are way higher than our merchandise exports, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे merchandise trade is deficit, and this deficit is around $68.5 billion.
$68.5 billion, which was $63.8 billion in the first quarter of the previous financial year. Moving on to the next point, in case of services, it is net receipts. Net receipts matlab surplus. So the surplus value is inflow minus outflow. The value is $47.9 billion, which has shown a strong rise. In case of primary income, that is outflow of profits, outflow of salary, outflow of wages, that is around $12.8 billion, which was $10.9 billion, which means dividend paid to the foreign investors increased, interest on external debt has increased. So rising outflow, India is paying more returns on FDI and borrowings. That is the interpretation. Moving on to the next point, secondary income, that is private transfers under liberalized remittance scheme or remittances. That means a foreign national resident in India who is residing in India may be transferring funds to his family outside in maybe Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bangladesh, and similarly, an Indian citizen residing outside India may be transferring funds to his or her family back in India. So this is inward remittance, this is outward remittance. So net inflow value is $31.0 billion. If you can see, this is pretty good value. And if I talk about only and only the inward remittance value of India, that is more than $100 billion in 1 year, and India is on the first rank in terms of inward remittances. India is on the first rank in the world in terms of inward remittances. Remember that. So this act as a stable cushion which reflects strong inflows from Indian residents or Indian citizens residing outside India, which is giving a strong forex backup to the nation. Now talking about the capital account, FDI, so net inflows are $5.7 billion. There is a slight decline in comparison to the previous data, but still it is close to the previous data itself. In case of FPI, it has increased from 0.9 to $1.6 billion. So more volatile than FDI, but still volatile ke saath saath the incoming values has increased or the net inflow has increased, which means world is still confident about the Indian market. In case of external commercial borrowings, the net inflows are $3.7 billion, which has almost doubled 2 times, which is a point of concern. Agar aap 2 times dekho, so it is a point of concern. Lekin agar aap value dekho, it's peanuts, then it's okay. So corporations are borrowing more from abroad, possibly due to the favorable interest rates. In case of NRIs, net inflows have almost been the same, $4 to $3.6 billion, and banking capital has witnessed a negative value of $1.6 billion. मतलब जो banking capital inflow है, that is negative, which was plus $2.9 billion last year. तो इसका मतलब इस बार outflow ज़्यादा हुआ है banking capital. क्यों? So because of the it is linked to the changes in banks' external liabilities and foreign assets due to n number of geopolitical issues, geographical fragmentation, as well as the tariff war which is going on. Last point is total capital and financial account is surplus and a value is $3.2 billion. So अगर आप capital account की बात करेंगे, it is surplus plus $3.2 billion. But on the other side, if you talk about the current account, so current account is deficit and its deficit value is $2.4 billion. Deficit value is $2.4 billion. So that means जो capital account hai, it has very easily, the capital account surplus has very easily overcome the deficiency of current account, which means overall अगर हम balance of payment की बात करें, so overall balance of payment is positive, and it is positive of what value? So it is positive of $0.8 billion. I hope you are getting my point. I hope you are getting my point. Now, first point is, sir, $0.8 billion तो हमें plus मिला from the balance of payment. So on balance of payment basis, अगर हम exclude करें valuation effects, if we exclude the valuation effects, then it has resulted an increase in the overall forex reserves of the country by
4.5 बिलियन डॉलर्स। तो जो आपकी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व है, इट हैज इंक्रीज बाय 4.5 बिलियन डॉलर्स। अब आप सोच रहे कि ये दोनों डेटा मैच क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज दिस डेटा इज बेस्ड ऑन दी transactions which are done by Indian residents with the rest of the world. In this case, we will also include the transactions done by Government of India. तो जो Government of India भी transactions कर रही है with rest of the world, that is also included in the reserves वाला part, जिसकी वजह से this value is not 0.8, rather it is more than 0.8. If you include the valuation, अब valuation का मतलब क्या हुआ? सर लास्ट ईयर आपके पास $100 थे, आपके पास let's say you had 100 euros, let's say you have 100 pounds. 1 euro last year was equals to let's say 1 US dollar. 1 pound was last year equals to let's say 2 US dollars. तो उसके हिसाब से if I convert it into US dollars, this is 100, 100 and 200, which means your total reserves were 400 billion, $400. अब हुआ क्या, इस साल आपका जो डॉलर है उसका वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द अदर करेंसीज हैज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर और एन नंबर ऑफ अनएक्सपेक्टेड announcements which are done by their government. I'll not comment more. तो ये जो price है, it has now increased to or changed to 1 euro is now available at 2 US dollars. 1 sterling pound is now available at 4 US dollars. इससे क्या होगा, ये $100 ही रहे, लेकिन जो 100 यूरो पिछली बार थे, जिसकी पिछली बार वैल्यू $100 थी, उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई $200। जितने 100 पाउंड की वैल्यू पिछली बार $200 थी, अब उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई $400। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो गई कितनी, $700। तो ये 400 से 700 का जो जंप आया, दिस $300 इज बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली वैल्यूएशन गेम। इसमें हुआ कुछ नहीं है, एक्चुअली द एसेट हैज नॉट इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ एसेट हैज इंक्रीज। ये वो बात हुई कि मेरे फादर ने मुझे कहा कि वी हैव अ प्रॉपर्टी जिसकी आज वैल्यू है लेट्स से 1 CR। मे बी आफ्टर 10 years आई मे से टू माई सन दैट वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ 10 CR। अब हो सकता है कि प्रॉपर्टी ऐड ना हुई हो, बट इसी प्रॉपर्टी का, इसी लैंड का, इसी शोरूम का प्राइस 1 से बढ़कर 10 करोड़ हो गया हुआ है, एंड दिस इज वैल्यूएशन। सो आपकी जो फॉरेक्स रिजर्व है, that include foreign currencies, that include foreign currency assets, that include gold. So due to the valuation of gold, due to the increase in price of gold, due to the depreciation of dollar, अगर आप valuation को include करते हैं, अगर आप valuation को include करते हैं, so valuation value is $25.3 billion, और अगर आप valuation को add करेंगे with the actual increase, so total increase is $29.8 billion. समझ आ गई बात? Is this point clear? So total including valuation effect 29.8, only valuation effect 25.3, only and only forex reserve volume increased by 4.5 billion dollars. समझ आई बात? क्लियर हुआ? अगर समझ आया तो एक बार yes sir जरूर टाइप करना in the comment section. ठीक है युक्ता, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। आईएमएफ ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बनाएंगे, यू विल बी इंक्लूडिंग द एफडी एंड एफपीआई इन द फाइनेंशियल अकाउंट ओनली, और आरबीआई जो है वो दोनों फॉर्मेट्स पे अपना डेटा, अपनी स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। इसीलिए मैंने जब अपनी स्टेटमेंट को डिस्कस किया तो मैंने यहाँ पर सिर्फ कैपिटल नहीं लिखा, आई हैव इंक्लूडेड कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, सो दैट इज ट्रू। ठीक है, आरबीआई की अगर आप वेबसाइट खोलोगे उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि ऑन व्हाट बेसिस दिस statement is presented. I hope Yukta your question has been answered. Sir, our service export is surplus because of big tech companies outside India outsourcing their IT services to Indian people. Yes, India ज़्यादा जो services provide कर रहा है, that is related to IT only. That is correct Yukta. Reports by important financial institutes should be done from recent months. नहीं, सहित्या रिपोर्ट्स की अगर आप बात करेंगे देन माय सजेशन वुड बी कि जनवरी ऑनवर्ड जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, यू शुड कवर दैट, दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है जी, तो ये कुछ ट्रेंड्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू विद द कंटेंट, एवरीथिंग हैज बीन कंक्लूडेड। लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द सेम। फर्स्ट वन, इंडिया रिकॉर्डेड अ करंट अकाउंट surplus of $2.4 billion in 2025-26.
करंट अकाउंट सरप्लस नहीं सर, करंट अकाउंट तो डेफिसिट है, सो दिस इज रॉन्ग. Merchandise trade deficit widened to $68.5 billion, true. Net service receipts has increased to $47.9 billion, true. Mainly IT services, true. Primary income outflows increased to $12.8 billion, true, because it's flow of profits, dividends. Personal transfers stood at $33.2 billion, reflecting strong inflows, that is also true. So उसके हिसाब से अगर हम चले तो I'll go with B option. 2, 3, 4, 5 are correct, but first statement is wrong. Moving on to the next question on the same. Which of the following statement about India's capital or financial account is correct? Net FDI inflow declined slightly to $5.7 billion compared to $6.2 billion. That is correct. अब आप देख रहे हैं किस तरह से examiner will use the data in your MCQ based questions, और अगर आपने डेटा कहीं मिस किया then it will be very difficult to answer these kind of questions जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. Next is FPI recorded higher inflow of $1.6 billion which was $0.9 billion, true. External commercial borrowing recorded lower inflows, नहीं sir, external commercial borrowings has increased from 1.6 to 3.7 because of cheaper loan available outside India, so this is wrong. NRI deposit recorded net inflow of $3.6 billion. अगर हम NRI deposits की बात करें, in case of NRI deposits $3.6 billion का inflow है, that is true. Last year $4 billion था, correct. Banking capital has shown a net outflow of $1.6 billion which was positive $2.9 billion in the previous financial year, that is also true. तो मेरा आंसर बनेगा 1, 2, 4, 5. That means A option is absolutely the correct answer. ठीक है जी, समझ आ गया, मजा आ गया. चलो अगला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन to the next news of RBI. Again this data is important क्योंकि ये रिपोर्ट भी क्या है, क्वार्टरली रिपोर्ट है. अब अगली जो क्वार्टरली रिपोर्ट है दैट विल बी, ये जून का डेटा है, जून 2025 के डेटा की जो रिपोर्ट है वो अगस्त लास्ट में आई है. अब जुलाई, अगस्त, सितंबर डेटा की रिपोर्ट अक्टूबर लास्ट में आएगी, और उससे पहले आपका IFSCA का फेज 1 भी हो जाएगा, RBI का फेज 1 भी हो जाएगा. सो इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट अगेन दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अगेन फुल ऑफ डेटा. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. What is this report? So this is basic statistical return on credit. So we have actually two documents. One is BSR1, other one is BSR2. BSR1 is for credit, कि अगर आप बैंक्स की बात कर रहे हैं, NBFC की बात कर रहे हैं, how much credit they are providing, क्या उनके क्रेडिट में ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है, तो कितना हुआ, कौन सा टाइप ऑफ लोन सबसे ज्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द बैंक्स, who are the majority borrowers, individuals, companies. So ये सारे डेटा के ऊपर या ये सारे एरियाज के ऊपर डेटा शेयर किया जाता है by RBI. Let's try to understand this. So BSR1 is a detailed quarterly statistical return that scheduled commercial banks excluding RRBs submit to RBI. तो RBI के पास बैंक्स अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं एक्सेप्ट RRBs, जिसमें ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी ऑफ बोरोवर गिवन है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की किसने लोन लिया, टाइप ऑफ अकाउंट की टर्म लोन है या ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज है, और ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि रूरल एरियाज में कितने लोन दिए, अर्बन में कितने दिए, सेमी अर्बन में कितने दिए, एंड मेट्रोपॉलिटन में कितने दिए. क्या पर्पस है इस डेटा को कलेक्ट करके रिपोर्ट प्रेजेंट करने का? सर RBI बेसिकली ट्रैक हाउ एंड वेयर बैंक्स आर लेंडिंग, what are the interest rate structure of loan given by the bank, and what is the distribution of credit in terms of sector, region and borrower category. मतलब borrower individual है, financial institute है, कौन है. दूसरी जो रिपोर्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज BSR2 which stands for Basic Statistical Return on Deposit. It's again a quarterly branch wise return that scheduled commercial bank excluding RRBs submit to RBI, which maps the structure of deposit across India. It talks, इसमें क्या क्या डिटेल्स दी जाती है, टाइप ऑफ डिपॉजिट, करंट, सेविंग, टर्म, ओनरशिप,
किसने डिपॉजिट अकाउंट खोला, हाउस होल्ड ने या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने। इंडिविजुअल का एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली की सीनियर सिटीजन के डिपॉजिट अकाउंट्स कैसे हैं, मेच्योरिटी पैटर्न कैसा है फॉर टर्म डिपॉजिट, 1 करोड़ से बड़े अकाउंट्स का नंबर क्या है, इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एज वेल एज ग्रुप कि कौन सी स्टेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा डिपॉजिट है, और बैंक ग्रुप्स का मतलब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स में सबसे ज्यादा डिपॉजिट किसके पास है। लेकिन याद रखना, रूरल एरिया का मतलब जहां पॉपुलेशन 10,000 से कम, सेमी अर्बन का मतलब पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख, अर्बन का मतलब पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख, और मेट्रोपॉलिटन का मतलब पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा। ये आज भी कैटेगराइज है ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस। अब इसमें जो जो पॉइंट्स याद करने हैं मैंने हाईलाइट वो भी कर दिए। क्रेडिट ग्रोथ slowed down to 9.9% in comparison to 15% in June 2024. Second point is share of loan below 9% interest rate is 54.1%. मतलब बैंक्स ने जो लोन दिया उन लोन्स में 54.1% लोन ऐसे हैं जिनका लेंडिंग रेट 9% से कम है। क्यों? Because of RBI has already decreased its repo rate. So it is basically the penetration of RBI's policy rate cut is being witnessed in the current scenario. If we talk about the weighted average lending rate, the weighted average lending rate has decreased by 39 basis point, which means 0.39%. ठीक है जी। अब what are the implications? So it means easier financing conditions for the borrowers. That is important. नेक्स्ट पॉइंट है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपके लिए सॉल्यूशन बना दिया। सबसे ज्यादा जो लोन लिया है वो लिया है पर्सनल लोन, सबसे ज्यादा अगर हम लोन की बात करें पर्सनल लोन, देन इंडस्ट्रियल क्रेडिट, एंड देन वी हैव द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बोरोड द लोन। दिस इज द शेयर, दिस इज द बोरोइंग शेयर। Personal loan is growing faster than the overall credit. Within personal loan, housing loan is equals to more than 50%, मतलब personal loan का 50% से ज्यादा हिस्सा housing loan के पास है। Retail lending is driving bank credit. This is the implication. Second, industrial के इसमें बात करें, growth is slowed down, share declined slightly, suggested muted corporate borrowing or investment demand. Public sector organizations की बात करें, strong turnaround, credit growth 11.3%, which was negative 1.7% last year because of higher infrastructure and capital expenditure which is done by government and government departments. ठीक है जी। अब इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बना के दे दिया है, चार्ट कहीं है नहीं, अब सर्च करना गूगल पे। चार्ट मैंने खुद बनाया टेलीग्राम एक्सेल पे जाके, सो दैट आई कैन गिव यू द डेटा। तो सबसे ज्यादा जो शेयर है आपके टोटल लोन में, दैट इज पर्सनल लोन 32%, second is industrial loan, then we have public sector organization, and then we have other loans. इसमें भी अगर हम कहें 32% वाला जो हाईएस्ट शेयर है उसमें भी सबसे ज्यादा या 50% से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज होम लोन का। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब अगर हम बोरोवर की प्रोफाइल की बात करें, बोरोवर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बोरोवर्स है, अगर पर्सनल लोन सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो बोरोवर्स है वो भी सबसे ज्यादा कौन होंगे, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का शेयर सबसे ज्यादा, आउट ऑफ द टोटल 100% बोरोवर्स 47.2% आर इंडिविजुअल बोरोवर्स। और अगर हम बात करें जेंडर गैप, सो क्रेडिट टू वुमेन हैज ग्रोन फास्टर देन टू मेन, वुमेन शेयर हैज इंक्रीज्ड टू 23.7% which reflects financial inclusion of women. तो ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अगला अगर हम बात करें ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मेजॉरिटी जो लोन है या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लोन है दैट हैज बीन गिवन टू दी मेट्रो सिटीज, या फिर आप ये कहें कि मेट्रोपॉलिटन ब्रांचेस, दे कंप्राइज ऑफ almost 60% of the total credit provided by the banks in the country. So metropolitan वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप बैंक ग्रुप की बात करें, सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। अगर आप शेयर वाइज बात करेंगे तो शेयर में, दिस इज नॉट ग्रोथ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर आप कहेंगे जो टोटल लोन दिया है उसमें सबसे ज्यादा शेयर कौन से बैंक का है, अगर आप शेयर वाइज बात करेंगे देन हाईएस्ट शेयर इज विद द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे बड़ा शेयर है इन लेंडिंग, उसके बाद प्राइवेट बैंक्स, उसके बाद फॉरेन बैंक्स, विच इज क्वाइट
अंडरस्टूड है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा तो उनका लेंडिंग शेयर भी ज्यादा होगा, फिर प्राइवेट बैंक्स होंगे उसके बाद, और उसके बाद फॉरेन बैंक्स। अगर हम शेयर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो शेयर है दैट इज 53.7% ऑफ द टोटल क्रेडिट, और आज भी वो लीड कर रहा है इस कैटेगरी को। लेकिन अगर आप ग्रोथ वाइज बात करेंगे ना, सो क्रेडिट ग्रोथ हाईएस्ट किस केस में हुआ है? सो क्रेडिट ग्रोथ हाईएस्ट हुआ है इन केस ऑफ प्राइवेट बैंक्स। अब इसका एनालिटिकल इनसाइट क्या? सो क्रेडिट ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन, structural shift in lending, financial inclusion in terms of women and rural and semi-urban areas, or public sector bank is still dominating the credit aspect of the economy. Moving on, BSR2. BSR2 की बात करें तो that is all around deposit. Aggregate deposit has witnessed a growth of 11.3%. Very important data. Term deposit grew by 13.7%. Saving deposit 5.4%. मुझसे पूछोगे ये डेटा आपको याद नहीं होगा, करो भी मत, लेकिन जो याद करना है वो ये कि अगर हम बात करें टर्म और डिमांड डिपॉजिट में, तो टर्म डिपॉजिट इज अराउंड 62.2% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, विच मींस डिमांड डिपॉजिट इज अराउंड 37.8%। तो कासा डिपॉजिट ऑलमोस्ट 38% है, और राफा डिपॉजिट इज अराउंड 62%, विच इज गुड कॉल। अगर आपको मैंने बताया होगा पहले भी, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कासा इज बेनिफिशियल इन कंपैरिजन टू राफा। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिपॉजिट रेट्स में तो कासा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से राफा इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस केस राफा डिपॉजिट इज अराउंड 62%। मेच्योरिटी पैटर्न देख लो, 70% लोन मेच्योर होते हैं इन 1 to 3 years। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म विल बी अ रॉन्ग वर्ड, मीडियम टर्म जो टर्म डिपॉजिट्स हैं उनका जो मेच्योरिटी है 1 to 3 years, दे हैव 70% ऑफ द शेयर आउट ऑफ टोटल टर्म डिपॉजिट्स। 20% है शॉर्ट टर्म के लिए विच आर मेच्योरिंग इन लेस देन 1 year। और अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ दी जो बचे 10%, दोज आर टर्म डिपॉजिट्स विच आर गोइंग टू मैच्योर आफ्टर 3 years। Then we have interest rate structure. Share of term deposit earnings greater than or equal to 7% fell to 65%. तो term deposits जो आपके हैं उनमें से 65% डिपॉजिट्स ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट रेट मिलता है 7% से ज़्यादा। बाकी के 35% जो टर्म डिपॉजिट है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है अप टू 7%। पहले के मुकाबले ये कम हुआ है। क्यों कम हुआ? सर सिंपल सा रीजन है, आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, आरबीआई ने सीआरआर कम किया, आरबीआई ने मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाई, एंड इफ द मनी सप्लाई इन द मार्केट इज इंक्रीजिंग, बैंक्स लेंडिंग रेट्स आर फॉलिंग डाउन। इफ बैंक्स लेंडिंग रेट्स आर फॉलिंग डाउन, अनडाउटेडली बैंक विल डिक्रीज इट्स डिपॉजिट रेट्स in order to maintain or in order to manage almost same NIM, that is net interest margin. If I talk about 1 crore and above deposits, so term deposits above 1 crore, their share has increased from 44.8 to 45.7%, again which is a good scenario for an economy. अब अगर आप बात करें सबसे ज्यादा लोन किसने लिया था? इंडिविजुअल्स ने। और सबसे ज्यादा डिपॉजिट भी किसका है? दैट इज हाउस होल्ड्स का। तो हाउस होल्ड डिपॉजिट हैज द मैक्सिमम शेयर ऑफ हाईएस्ट शेयर ऑफ 59.9%। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का जो शेयर है इन डिपॉजिट दैट इज 7%। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आरबीआई क्वेश्चन पूछेगा, सीनियर सिटीजन होल्ड 20.4% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। तो जो टोटल डिपॉजिट्स आपके फाइनेंशियल सेक्टर के पास है, बैंक्स के पास है, उसमें से 20.4% बिलोंग्स टू 20.4% belongs to whom? So 20.4% belongs to senior citizens. अब अगर हम बात करें बैंक ग्रुप की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर उनका शेयर लेंडिंग में सबसे ज्यादा है तो इनका शेयर डिपॉजिट्स में भी सबसे ज्यादा है। लेंडिंग का शेयर वाज अराउंड 60% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेंडिंग का शेयर वाज अराउंड 53.7% और डिपॉजिट का जो शेयर है दैट इज 57.3%। दीज आर द डेटास व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन की बात करें, वो इंडिया में जो टोटल डिपॉजिट है उस टोटल डिपॉजिट का 54% डिपॉजिट इज रिसीव्ड ओनली एंड ओनली इन महाराष्ट्र, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो कंसंट्रेटेड है डिपॉजिट इन 5 स्टेट्स में,
which is a point of concern, or concentrated in terms of household deposits, which is 47.8%, which is 47.8%. तो अगर हम बात करते हैं इन 5 स्टेट्स की, उसमें टोटल डिपॉजिट का 54.3% है और उसमें भी 47.8% हाउस होल्ड डिपॉजिट है। मैं ये वाला डेटा हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस विल कंफ्यूज यू, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल डिपॉजिट्स तक अगर आपको याद है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी। So this is the conclusion I have given to you. Preference for term deposits, medium tenure dominance, rate softening visible in liability mix, rise in large ticket deposits, ownership shift, senior citizens dependency, bank group dynamics and geographic concentration risk. तो ये मैंने conclude कर दिया पूरी स्टोरी एक पेज पे। अब अगर आपको देखना हो इससे रिलेटेड कुछ कंपैरिजन, so this is the year on year basis comparison just for your reading purpose. इसको याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रीड कर लेना बहुत है, और जो डेटा मैंने पीछे मार्क कर दिया वो याद कर लेना। पिछले साल के डेटा को तो याद करना भी मत, बस कंपैरिजन देख लेना कि इंक्रीज हो रहा है, दैट इज गुड। कंपैरिजन देख लेना, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज गुड। ये मैंने डिपॉजिट और क्रेडिट दोनों का नेक टू नेक कंपैरिजन भी आपको दे दिया, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, पढ़ लीजिएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न ऑन क्रेडिट इज और आर करेक्ट? BSR 1 submitted quarterly by all scheduled banks excluding RRBs to RBI, that is true. It captures account level data on credit classified by borrower's occupation, type of organization, account type, interest rate, geography, true. June 2025 BSR 1 showed bank credit growth slowed to 9.9%, that is true. The share of loan below 9% interest rate, share of loan below 9% interest rate from 43.2 to 54.1, reflecting the monetary easing. देखो जरा, reflecting the monitoring ease, that is also correct. Personal loan has shown sharply, slowed sharply. No. Personal loan तो increase हुआ है, so 1, 2, 3, 4 is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखो, BSR 2 से रिलेटेड है। ब्रांच वाइज क्वार्टरली डेटा ऑन द डिपॉजिट्स, ट्रू. It covers deposit types, ownership sector, maturity, size bucket, true. As of June 2025, aggregate deposit growth was 11.3%, which was 11.7%, true. Term deposit rose to 62.2%, true. While the saving has witnessed a growth on year basis, that is 5.4%, that is true. The share of deposit earning greater than 7% interest इंक्रीज टू 65%, ना सर ये तो कम हो गया ना, ये शेयर ज्यादा थोड़ी ना हुआ है, ये तो कम हुआ है, ये तो कम हुआ है, ये ज्यादा नहीं हुआ। अगर ये ज्यादा नहीं हुआ, वैल्यू सही है, 65% भी सही है, बट इट इज नॉट रोज, इट हैज डिक्रीज्ड। अर्लियर इट वाज ग्रेटर देन 65, सो आंसर इज गोइंग टू बी 1, 2, 3, 4 ओनली। गॉट इट गाइस? क्लियर? मजा आया? जिसने आज पहली बार ये क्लास अटेंड की है, आई रिक्वेस्ट यू मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इन ऑर्डर टू डाउनलोड द PDF। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा एंड यू विल बी टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ दोज क्वेश्चंस क्विकली। दीज आर द होमवर्क क्वेश्चंस एंड आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स इन द नेक्स्ट सेशन। रेडी गाइस? ऑल सेट? Shall I present the questions to you? So I will be giving you around 10 seconds for every question so that you can take the screenshot. देखना जरा, I guess 3 या 4 questions हैं. Take the screenshot quickly. I hope done. Next, take the screenshot quickly. दूसरा question. This is the third question. This is the fourth question. This is the fifth question. ठीक है जी, तो एक बार देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा. If the comments will be more than 20, then I will be sharing my answers before my next session in the comment section only. और अगर comments 20 से कम होंगे तो I will be sharing the answers in the next session only.
इस सेशन की PDF you will get on my Telegram channel, that is Economics by Madhav Arora. @Madhav Arora is my handle. Thank you so much for joining. Good luck. God bless you all. फिर से कहना चाहूँगा, this is the last chance. Give your 100% in order to clear this examination. So stay tuned. Work as hard as you can to clear this examination in the very first attempt. Thank you so much. Good luck. God bless you all.